Ji, Assalamu alaikum. Hello to everyone who are watching us live on three platforms YouTube, Facebook, and LinkedIn. This is Noman Aziz with another LinkedIn, Facebook, and YouTube live. Uh, आज के जो हमारे guest हैं, he's a well-known person in Pakistani media industry. I'm talking about Shahzad Nawaz. Shahzad is a filmmaker. He is a media personality. He appears quite frequently on many live streams, and he's very much, you can say, in depth in Pakistan social, cultural, and political as well as media related issues. So, मैंने शहजाद को आज invite किया, especially to discuss the media prospects, career in the media industry of Pakistan. So I will not take much more time. I will take Shahzad in the stream. तो हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं करियर से रिलेटेड. So Shahzad, again, very warm welcome to my live stream, and thank you very much for taking time out of your busy schedule. It's my pleasure. It's my pleasure entirely. Entirely. Right. So I think It's good to everything be is here. fine. So we have a lot of people who are already commenting on different platforms like LinkedIn, Facebook, and YouTube. LinkedIn के बारे में आपको पता है, it's completely, kind of a professional platform. So most of the people who are looking forward to pursue career in different industries, looking for jobs, they already have their professional profiles available on that platform. So हमारी जो discussion Right. होगी, that would be in English plus Urdu language, because again the topic जो सा है वो काफी you can say relevant है पाकिस्तानी industry से. So a lot of Pakistanis who would be watching us out there, so वो चाहेंगे कि थोड़ा सा हम अपनी नेशनल लैंग्वेज में भी बात करें. तो शहजाद, सबसे पहले we would like to have your introduction, your background, because I was checking out कि आपने economics और business में studies की हैं, but you are in mainstream media of Pakistan. So how do you correlate how you came to this industry? I mean, we can learn from your career path, that how you actually crafted your career path. I was just, without really having to bore your audience, I was always meant to be a career soldier, and somehow, unfortunately, I flunked military college JLM examinations, hence becoming the only civilian in my family. And then not really knowing what to do and where to pursue my career. I ended up in the creative discipline, and after doing my business and economics, I went ahead and I did a double majors in design and advertising. And from there on, I built on its subsidiaries and ancillary disciplines such as filmmaking, music production, voice talent, you name it. Television, I've launched the most number of news channels and channels in Pakistan, Wow. which essentially means that I bring in visual information arts. And I mix visual information with technology to present a screen. So therefore, when I say I launch channels, it can entail team management, team development, hiring systems, hierarchy, platforms, integration, using the technology available, and creating the brand, the strategy, the look and feel of a channel. So the most number of channels that you see in Pakistan, whether I don't know if I should be credited for it as an accomplishment or as being a culprit of the plethora of channels that we have in Pakistan. तो ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है. मैं ज़्यादा इस पर ड्वेल करना नहीं चाहूँगा. मुझे लगता है थोड़ा बोस्टफुल हो जाता है. जिसको ज़्यादा मज़ीद मेरे बारे में मालूम करना होगा वो गूगल कर लेगा, तो कुछ ना कुछ उसको मिल जाएगा. But And I'm a that's the humble beauty, student of media. and that's the beauty of today's world कि आपको बहुत बड़ा introduction देना नहीं पड़ता. It's everything is on your fingertips. You can type in on Google, or you can go on specific website or platform. You can get to know Or everything about LinkedIn. big individuals. Or Exactly. LinkedIn. Like you say, LinkedIn. Ji. Ji. तो आपको शहजाद साहब, आपको कब महसूस हुआ that you are not for business or economics? You have to go in a creative field and start doing all these things. नुमान, आपको किसने ये कहा कि ये प्रोफेशन बिजनेस नहीं है? नहीं, I'm just asking ये because तो lot of मैं So let me put it this way.
मिसाल है, मैं लाहौर में रहता हूँ और हमारे यहाँ जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक है, हमारी जो यूटिलिटी कंपनी है जो हम्म, बिजली प्रोवाइड करती है, पावर कंपनी, इट्स कॉल्ड लेस्को, लाहौर की। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं महीने के आखिर में लेस्को के दफ्तर जाऊं और उन्हें कहूं जी बात यह है कि ये ले बिल और ये मेरे टैलेंट से काट ले, हम्म, तो वो मुझे कहेगा कि नहीं, वेट अ मिनट, वी नीड मनी, राइट। गैस का नर्दन गैस का मैं नर्दन गैस चला जाऊं, बोलूं जी इस महीने का बिल मेरे टैलेंट से काट ले, मेरी राइटिंग से काट ले, वो कहेगा नो जॉनी, यू नीड टू पे कैश। exactly. This is purely a very organized and disciplined business, just like any other business. Therefore, हम्म, I am in the business. The difference is that I happen to be in the business of idea incubation. मैं ख्वाब देखने की तिजारत करता हूँ. very So true. it is absolutely a business with a business model, with inflows and outflows, with capex and opex, just like any other business. हम्म, It's just a different discipline as opposed to other career paths. काम ये भी है, इससे भी रिस्क हलाल कमाया जाता है। इसके भी बहुत सारी जहतें हैं, डिमेंशंस हैं, हम्म, परतें हैं, देयर मैनी एवेन्यूज, देयर मैनी डिमेंशंस टू communication arts and performing arts, collectively known as media. And media, as you know, is not a singular word. Media itself is a plural, हम्म, and it means mediums, many mediums. Therefore, there's so many sides to this trade. So once you call it a trade, essentially it means it's in business. right. काफी ज्यादा कमेंट्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए, so I will try to show some अच्छा comments. जी. We got Afjal Ahmed. Excuse me. He's watching us from India. Then we have Adil. I think he's from Pakistan. Then we have Mahindra Singh again from India. Then we have three. Anikwati. I think she might be from Philippines or India. She didn't mention her location. And then we have Yusuf. So there are many comments. So people are watching us from I'm Nigeria, glad. India, Pakistan, Egypt, and we got some good friends who are part of my LinkedIn network as well. So it's. Then we have Saima. You Saima is you so it's famous, like huh? Numan, you're famous. no. I think the credit goes to LinkedIn and the social media platforms that you just go live, and if you have developed a community, then all the people can be on board. So then we have Adil from Qatar. Then we have Zoya Usman. She is, I think, from Middle East. So there are many people out there who are watching us. So again, we will try to balance between our national language and English language. So all I of will try you, that as well. I will yeah. try that. So all of you who are watching us, doesn't matter from where, if you have any questions from Shahzad, you can type in your questions before we will wrap up our live stream in the last 15 minutes. We will take all of your questions and comments and your opinions. So Shahzad, moving forward, as you mentioned that media is a plural. It's got many dimensions. लेकिन एक आम बंदे को जिस जो मीडिया के लिए ख्वाहिशमंद है या मीडिया में अपना करियर किक ऑफ करना चाहता है, उसको पता नहीं चलता कहाँ से स्टार्ट करे। Person, if you are in medicine, आपको पता है आपने हाउस जॉब करनी है, then you have certain things right in front of you. आप बिजनेस प्रोफेशनल हैं, आपने एक कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करना है, इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, then you know how you can move forward. लेकिन मीडिया में जितनी भी पर्सनालिटीज को आप सुने या देखें, तो कोई कहता है कि जी आई केम हियर बाय चांस, मैं किसी को मिला, किसी डायरेक्टर ने मुझे देखा, उसने मुझे कह दिया, किसी ने। सो हाउ डज इट हैपन यूजुअली? It happens like magic, abracadabra. देखिए, this really is a tough question, really, despite the simplicity with which you have put it forth. It is very difficult to answer, and I tell you why. Because when you say that, people often tell that it was sheer coincidence that they ended up, say, in front of the screen or behind the camera. You're speaking of performing arts. And when we speak of performing arts, there are so many different aspects to performing arts as well, right? There's theater, there is television, there is radio, there's film,
right? So, if we take each component, you will not have enough time in this discussion. Why? Because, say, we pick radio or television, then you're looking at from engineering to creative to administration to being on-screen talent to being a producer to being an editor to being a director to being the manager, the chief operating officer, what have you. Therefore, just like any other business, any other trade, any other profession, media itself is also a composite of so many dimensions. Now, so it is all right for someone to actually land into media by sheer coincidence, by having talent to perform, and that only applies to very often to actors, but it may not necessarily be true for directors or lightmen or sound engineers or script writers, for it is a discipline that requires training. You will have to undergo training. I mean, obviously, ideally, you need to go through acting school as well if you need to be a good actor. But we have seen in most cases in the subcontinent, specifically Pakistan, that majority of my friends and colleagues from the industry, as you know, I dabble into acting every now and then, are actually self-taught. But this is because there wasn't necessarily an institution that was teaching performing arts in Pakistan. The first Pakistani performing arts school came about in mid 2000s when the then president General Pervez Musharraf actually turned the Karachi Hindu Gymkhana, which was a trust property, and turned it into a performing arts school. So it became the first school in Pakistan. Therefore, majority of people that you see on screen, be it film or television, and now digital, are people who have come with a background of being self-taught and learning through experience by observing masters through films, be it films from India or films from the West or Europe. So now, other than that, every other discipline can be learned, but then it through apprenticeship. And of course, subcontinent, as you know, has a huge culture of apprenticeship. For example, how we see the car mechanics, how the apprentice will come and learn, and through active learning process without any academic side, actually ends up having his own workshop. But now with the advancement of television, and we've got about more than 105 television stations in Pakistan, leaving the state broadcaster aside. So you can imagine the size of the industry has grown, right? Hence the competition in terms of recruitment. Therefore, many schools have sprung up in Pakistan teaching television and broadcast as a subject, and offering a bachelor's degree in this field. Yeah, yeah. I mean, what I So it personally is experienced, difficult. Gigi, sure. please go ahead. Please go ahead. What I personally experienced in last Excuse couple me. of years, yeah, especially last 1 or 2 years, that people are much more fascinated about the political content or news channels. There are many news channels in Pakistan, and there's a bombardment of political content on our main media screen. So how do you see that? Is it a time to balance the entertainment plus news, or how? What is your perspective about it? Yeah, out of the total advertising budget in Pakistan, 51% goes to television. Right. And within television, about 55 to 60% of the advertising pie that goes into television advertising goes to news and current affairs. And I think this is a phenomena. Why? Because if you look at newspapers,
we've always had the most number. I think we would have been, we are one of the few countries in the world with most number of newspapers still Okay. in print, not arguing or discussing their total size in terms of circulation or readership. Mm. I think this is a phenomena which is known to all developing countries, especially if politically the path to attaining a good life has been turbulent. And if you look at Pakistan, of course, we look at the times of military intervention and then again the return to democracy, Mm. right? So if you're looking at overall 72 years of Pakistan's history, then we know that there have been, it's quite checkered and debated. Therefore, the interest in current affairs and politics is higher. Mm. Why? Because simply every one of us is wanting and aspiring to have a life as promised and enshrined in the Constitution of the Islamic Republic Mm. of Pakistan. I mean, if you look at the Constitution of Pakistan, so starting from Article 4 all the way to 28, it talks about the rights and the role and responsibility of the citizen and the state towards each other. Therefore, the genesis and the premise of the social contract, तो इस बिना पर इस वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है, people's interest invariably lies in the political domain. Why? Because they wish to know what is going to Mm. happen next. So so this is why you see a phenomenal number of news channels, despite the fact that although I'm in the business of doing it, I Mm. also Yeah. see that there probably should not be more than 4 or 5 different channels, and that should be about it. But after the Kargil war, Pakistan realized that it could not stand up to the narrative of the private news media enterprise of India Mm. in terms of narrative building. Therefore, we liberated Pakistan's policy and allowed for private sector news organizations to come in and play their part. Mm. And please keep in mind, this is the time when cross ownership of media was not permissible in Pakistan. Therefore, the initial cases between for Jung having its own offset, which was Geo or Dawn newspaper coming up with Dawn News, Mm. and I mean so and it was later, of course, agreed, and the amendments were made into law for cross ownership of media. Now, so this is one of the reasons. Second, are entertainment. Now, there are many reasons. There were times in Pakistan that our drama was our hallmark of creativity, of our intellectual input, creative pursuit. But I really don't think that the same holds true now. So our standards of creative delivery has, while it has increased in terms of its technical presentation, Yeah. I Thank you. think it has gone down in terms of the content. Therefore, people, and then also the third factor, that people in Pakistan have average people have just one television set, which means that when the man of the house comes back home, he wants to watch the news because usually the men folk are the news junkies. Exactly. I think If it that's if it makes sense to you. yeah. I think it's a very very logical point that again, media industry is also a business, and business watches out at what they really need to sell, what content Sure. people gonna buy, and from where they can make some money. अच्छा अब मेरा जो And keep आप in mind, just one addition. Keep in mind that during this time the digital era came in, right? Hmm, Therefore, the video on demand became bigger right. as opposed to any other time. And then came COVID-19, which accentuated digital consumption and Hmm, video on demand. So the concept of appointment viewing for entertainment has lost its novelty. For example, if I miss out on a particular drama I wish to watch,
I can always, log back on at the time of my choosing on YouTube and watch the episode. And the channels don't mind because it's still going to get monetized anyways. In fact, for them, this is the cherry on top because they're already getting monetization through ad revenue when they air it the first time. And then to each original airing, there are two repeat airings. And then on top of all this, you have the Right. digital platform. So Right. therefore, this is also the reason why news has the currency of time as opposed to Right. entertainment. Entertainment can be watched later. Mm. News is on the hour as it happens when it happens. Therefore, watching news live versus watching entertainment television, there's a huge difference. अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल जो सा है बेसिकली उन जी, लोगों की तरफ से है who would like to pursue their career in Pakistani media industry. For example, when we talk about corporate sector, they have जी, जी. liaison with different universities, with business institutes. Then they have their career websites. They publish their career Right. websites on different platforms, and they tell people that we are looking for so and so talent. किसी को business development चाहिए. अब अगर मीडिया को आप as a business लें, तो आपके पास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी होगा, आपके पास बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी होगा, आपके पास सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ, Sales, सेल्स है। sales and marketing. एग्जैक्टली तो ये जी. सारे वो शोबे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल क्रिएटिव नहीं है, आप टैलेंटेड नहीं है, यू आर नॉट अ म्यूजिशियन, यू आर नॉट एन एक्टर, बट स्टिल यू कैन जॉइन द मीडिया सेक्टर इन ऑल दीज Absolutely. डिपार्टमेंट। तो Absolutely. मैंने जी. इसकी हायरिंग कैसे होती है? इसकी हायरिंग पाकिस्तान में जैसे ज्यादातर होती है ताल्लुकात। आप मुझे एक बात बताइए, मीडिया के अंदर भी पाकिस्तानी है ना? हम्म। कहीं बाहर से तो नहीं आए, मरीख से तो नहीं एग्जैक्टली। आए, खलाई मखलूक तो नहीं है। नेपोटिज्म, cronyism, favoritism, which is prevalent and rampant हम्म। in any other sector, exists in media as well. People have their own likes, dislikes, biases. There's no meritocracy overall. Of course, there are exceptions and anomalies. As for you saying that there are other disciplines involved, I had said earlier on when I started speaking, आपके सेशन में मैंने भी यही कहा था, and I maintain, media is not about being creative, as in a person claiming to be creative. Media involves, just like any other trade, all different organs and functions and roles and responsibilities as like any other organization would. The product, however, is different in nature, but does not mean that it does not require that infrastructure, the human resource structure that is required for any other profession. So you're right on the scent when you say कि जी इसमें और लोग भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं. However, the person who is going to be in it will have to have certain liking, or should I say, must fancy the industry by and large. For example, as an HR person, I mean, an HR person is an HR person is an HR person, but no, right? Because if you are the HR manager or a headhunter looking for someone on behalf of the client's interest in media, then you will have to know what the job description requires, right? Even if it is a, for example, logistics manager. Now, a logistics manager, for example, is a logistics manager if he's working for Avis or Hertz or Enterprise Rent-A-Car, right? However, when you're being a logistics manager looking after the fleet management in a news channel, it's different. In an entertainment channel, it's different. Therefore, वो शौक या थोड़ी बहुत aptitude होना चाहिए to come into this industry. How do you get in? You just simply apply. And all the major channels in this country, in Pakistan, have a website. They also have a career opportunity page. But having said that, these are turbulent times. Ever since the last government, the current government came in 2 years ago, somehow media has been on a nosedive in terms of its
revenue stream in terms of, so there have been lots of laying off much before the COVID came. लोगों को नौकरियों से निकाला गया. There's been unfortunately all the major television networks have slashed the salary structures, and they have gone down to 30% or 40% cuts. The same has happened with entertainment television. So I'm not sure if now is the right time to be in media, because also the government policies changed drastically when the last Minister of Information, and for the better, he was trying to, do course correction, and he did so brilliantly. It was much required. However, वो कहते हैं ना कि चलती हुई गाड़ी को अचानक रोकोगे तो वो ricochet का effect होगा. So you had to really ease in the reforms as opposed to have a knee-jerk correction. And as a consequence of that, it created a dominoes effect. Because the entire structure, the revenue structure was, and again, like I said, on a personal level, rightly so, by the current government, by the then Minister Information Fawad Chaudhry. And he rationalized with the Press Information Department the tariff structure and the categories, which was essentially to ascertain the price or the cost of per minute advertising on television, for example, and other spaces, broadcast spaces like entertainment TV or sports or culinary television or newsprint, newspapers, periodicals, magazines, weeklies, etc., etc. But it happened so fast, इतनी जल्दी हुआ कि हर चीज तितर बितर हो गई. So if I was making 100 rupees, I ended up making 60 rupee now. Therefore, I had to let go of people, and I had a surplus pool. So right now, if you asked me honestly, if कि वो कौन सी industry है, which industry has the most number of jobless professionals, I would tell you it's media. Be it television, be it film, radio, you name it, actors, producers. I mean, so things are bad right now. But of course, the good news is that the special assistant to the Prime Minister, Asim Bajwa, who was previously the Director General ISPR, has presented, and it's in the news, a reform and an entire rejuvenation paper for media and film in Pakistan. So we expect good news coming soon, and where the government is going to take interest. Because you will have to understand that media at the end of the day is also part of any country's soft power, non-kinetic energy. So for right now, things are bad. But I do see, I think in the next 2-3 years, we will be able to, come to a point where new people would be able to join in this trade. For now, I think it's a stalemate. It's going to be so for another 6 months to a year, and it has got nothing to do with this pandemic. Yes. My next question to you is about music. I know you have been associated with Coke Studio as well, and you're a musician. And when I look back in the era of 90s and the beginning of 2000, so at that time there was Janoon, there was the Vital Signs, and there were so many other bands. Even ke Pakistan ka jo national television, PTV, they used to have kind of windows to show their pop bands and the rock bands and the music. There was a generation coming up with then Pepsi, the competition and all that. But now, when you look at the music industry of Pakistan, you don't see the power of your band. So, ये क्या सब खत्म हो गया है या किसी आप ये कह लें कि किसी तय के नीचे चले गया है? Why they're not visible enough the way they used to be? Okay, now first of all, just a little correction. I'm not a musician. I'm a music producer. Okay. So I produce. I do not play music. But anyways, having said that, your question is important. It has many, again, there's so many factors that have led to this misnomer. I mean, what you have just said is not entirely true. And let me explain you.
The era that you speak of, 1990s, is a time when there was only one channel in Pakistan. There was only one television channel in Pakistan. Therefore, the entire country was just looking at that one particular screen. However, after 2000, when the private television was allowed in Pakistan, we saw a growth of music channels from MTV, Asia in Pakistan, to Indus Music, to Jalwa, to Jika Boom, to The Music, and other channels. Oxygen, and there were other channels of the line. And they did phenomenal business. But please keep in mind, now there was a transition in technology as well. So from a audio cassette, the time that you were referring to in the 90s, we moved on to CDs, and still it was fine. And you would go and buy an artist or or a band you wish to listen to quite easily from any of these stores that would carry. And there were these specialized music stores as well, and distribution companies in Pakistan. There was Sonic, there was Eagle, there was many, and then EMI, which was an international company also in Pakistan. And they were the distributors and producers who would invest or buy an artist's album. But suddenly, I think it was from your country in Germany, this person came up with the MP3. He came up with MP3 technology, All right. and that changed everything. And Apple was the first one to enter iTunes, to enter this market. And this is Spotify and Deezer and other platforms. Amazon Music came much later. So Pakistan, by and large, was missing from these platforms, by and large. Artists stopped producing because their main business was coming up with an album which featured anywhere between 10 to 12 singles, compiled together as an album, which would do good. In the event that it would do good, they're gonna get concerts and tours, to different countries where Pakistanis are present in huge, the communities, and they would tour, and this is how they would start making, a livelihood for themselves. This is how they operated. जब MP3 आया, तो albums खत्म हो गई. There was no Pakistani portal. Now we do have Tazi, and I'm forgetting Patari. There are two right now. I haven't Much too heard late, about too that. little, Yeah. too little, too late. Okay, Tazi and Patari, and I don't know Okay. if there's any other one. So they have started to now put together this part. Now, in the meanwhile, why I said it's a misnomer कि music खत्म हो गया. अच्छा, इससे पहले कि मैं बताऊं, एक और चीज़ आ जाती है. We must also take into this consideration. Films died in Pakistan. Yeah. Music had a huge presence in films in Pakistan, right? So from 1947 until 1996, I think, we did phenomenally well with music. हुआ ये कि सिनेमा बंद होना शुरू हो गया. That's another debate for another time. Yeah. Why it happened, blah blah. So music also started to die there, right? And then, now why I was saying it was a misnomer. We saw something called Coke Studio. Excuse me. Coke Studio, Pakistan, is a case study for Coke itself compared to Coke Studio, India, or Brazil, where it started. Okay. To a point that Pepsi felt the heat and came up with Battle of the Bands that did not do quite well for its own format. And then came Nescafe Basement. So we saw these multinationals investing heavily into Pakistani music. Now, it is correct that at one point in time, Pakistan Television was solely producing music, and for television, and then we had Radio Pakistan. So these were the two places where there was music being produced.
originated, created. And that part, because of the private channels, we went into niche or niche channels. So we had separate channel for religion. So we started going into segmentation. Yeah. And so we went into music. Now, why did it stop? It stopped simply because we were signatories to the intellectual property regime, right? Therefore, all these music channels were playing library music without giving royalty to the respective artists. Okay. So when Pembra enforced, according to its the Pembra laws, that you cannot actually play, for example, Shahzad Nawaz's music unless you have the consent, right? So the channels would rather go out, they just packed up their business because they realized कि यार इतने पैसे देने पड़ेंगे हर गाना चलाने के. So let's just pack up this. So we still have music channels, but बहुत कम रह गए. रॉयल्टी का इशू अभी भी है, इसलिए म्यूजिक मरा है कि हमने लॉ को अबाइड नहीं किया. म्यूजिक इसलिए नहीं मरा कि पाकिस्तान में म्यूजिशियन भूखा मर रहा है या नहीं रहा. देर ऑल हैप्पी. We have Atif Aslam, we have Rahat. They're all phenomena post 1990. As for Janoon, when you mention, English Biscuit put their brand money behind the reunion of Janoon with Super Hai Pakistan, the whole concert that they did. So music is very much alive and kicking. Pakistani films have started to come up again. We have new lyricists and songwriters. We have new singers. For example, QB, Kuratulan Baloch, she's a relative, Nadir Abbas. And I can name you hundreds of singers who came after the so-called 90s era. And because there is space for music. और क्यों ना हो, जब आपका दिल धड़कता है वो म्यूजिक है. कायनात में हर जगह म्यूजिक है. There's this rhythm, right, about life and nature. So I respectfully disagree कि अब म्यूजिक नहीं है. म्यूजिक अब भी है, पहले के मुकाबले में ज़्यादा है. अब हमारे हर ड्रामे के अंदर म्यूजिक का OST होता है. अब आप हिसाब लगा लें 14-15 बड़े एंटरटेनमेंट चैनल, हर एक के प्राइम टाइम पे और अर्ली प्राइम टाइम पे और लेट प्राइम टाइम पे ड्रामा आ रहा है या सिटकॉम आ रहा है या सोप आ रहा है. उन सब का म्यूजिक आ रहा है. But उनमें गाने आ रहे हैं, साउंड really, ट्रैक्स आ रहे हैं. so it means that in totality, that's really positive news. Oh Everyone yes, who's oh watching yes. us and who would like to pursue or start or expand their career in the music industry of Pakistan, for them it's a really really positive thing that And the good part is, Numan, the good part is, there are schools. There's Arts Council of Pakistan giving, formal, structured musical classes and teaching, training. There's National Academy of Performing Arts, again in Karachi, Arts Council in Karachi. Then we have National College of Arts in Lahore. Then you have Alhambra Arts Council, Lahore. Then you have Sanjan Nagar School of Music Okay. in Lahore. ये तो सिर्फ वो है. So you can get, and you can always go abroad like for any other subject. I have my friend who went to the London School of Music, and he learned sitar and tabla. He's a maestro now in the UK. And apparently, he's like a big name now. So what I'm saying is, just like you want to go outside Pakistan to pursue your degrees and so many other, like business administration, Yeah, and or any other, or psychology, human resource. I see a lot of people going into human resource and business administration. I mean, the world is your oyster, like they say in Scarface. Go and, explore newer avenues. exactly. Perfect. So that's really positive. So I think आपके साथ बातें करने में टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि बातें आपकी मुझे काफी लगेगा क्योंकि अंग्रेजी बोलना मेरे लिए कितना मुश्किल काम है. मुझे पता लग रहा है बहुत टाइम गुजर गया. आई हैड टू स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश. मेरे से चलिए, I इतनी think अंग्रेजी नहीं बोली जाती.
नहीं, आई थिंक इससे फायदा ये होगा कि जो लोग हमें दूसरे मुल्कों से देख रहे हैं, वो कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, तो बट एटलीस्ट आपका टॉपिक तो करियर इन मीडिया, मैं तो पाकिस्तान का ही पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली। अगर बाहर की बात होगी तो किसी के चाचे मामे की वजह से नौकरी मिलती ही नहीं। ये तो हमारे यहाँ होता है कि आप किसको जानते हैं। फलां का तो अगर बेटा। मैं अंग्रेजी में भी ये बोलूंगा, तो अगर मैं अंग्रेजी में भी ये बोल दूंगा, उनको समझ ही नहीं आएगा ये फिनोमिना है क्या, कि मेरे चाचे मामे के नाम से क्या ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही। बट या दैट वाज ऑन अ cynical साइड ऑफ मी, बट या प्लीज गो अहेड। अच्छा, अब चूंकि टाइम की कंस्ट्रेंट है तो हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। So there are a lot of your fans in the comments section as well. For example, Saima, she's saying that she can't really miss watching and listening Shahzad, so I think she's your big fan. वाह, And वेरी then, काइंड ऑफ हर, वेरी काइंड। yeah, so then we have Lakshmi Dutt Bhatta, and she would say, "Can we talk on business ethics in South Asia?" So maybe you can quickly have a comment about this specific thing, business ethics in South Asia, before we move Well, forward to our. I mean, so there are two extremes in South Asia. There's the good one and the bad one. So we are in the middle. So it's a huge spectrum. We have great practices, great examples of great practices, ethics, morals, etc., etc. And on the flip side, we have a plethora of examples of things not being done in the ideal way, starting from sweatshops, labor violation of labor laws, etc., etc. So I mean, they both exist. What obviously is lacking is the implementation of law, which already exists in South Asia, because there is no constitution, there is no law in any of the developing countries or emerging economies in South Asia where they tell you to employ child labor, where there is no law that actually tells you to exploit your laborers. Therefore, I think the biggest stigma of South Asia is the compromises that we make because of the disparity between our GDP, our population size, our economic growth rate, etc., etc. Again, this is like a whole new topic, and New I just horizon, yeah. constrained myself to just this part of the answer. But Yeah, you know so what I then, mean. yeah, so then we move forward to our next question. शहरियार ने पाकिस्तान से पूछा है that e-commerce and digital media, और वो इसके फ्यूचर की बारे में बात कर रहे हैं कि that e-commerce and मैं बात कर चुका हूँ जी, बात कर digital चुका हूँ, बहुत बड़ा फ्यूचर है media। डिजिटल। अगेन, मीडिया लव्स की तरह कोई एक चीज़ है नहीं। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेके कैम्ब्रिज एनालिटिका का एग्जांपल आपके सामने है। Exactly. इसको अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहें, इसको कहते हैं एक्टिव मेजर्स, एक्टिव मेजर्स। इसको थोड़ा रिसर्च कर लें, ये क्या चीज़ होती है। ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के एम्बिट में आती है, जब सरहदें बदल चुकी हों। अब आपकी सरहद जो है वो आपकी जोग्राफियाई सरहद नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल भी होती है, वो नैरेटिव की भी होती है। अब Exactly. अब अब बंदूक सिर्फ हथियार नहीं है, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी हथियार है। It's Therefore, more so lethal than Bandook. digital is huge. So Yeah. digital is huge. So it really depends on what aspect of digital you're speaking of. But whatever it is, do know कि सब में बहुत, और पाकिस्तान तो ग्रीन फील्ड है, अभी Right. इमर्ज कर रहा है। डिजिटल पाकिस्तान इस गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, और अल्लाह करे उसमें उसके थ्रू बेहतरी आए। पाकिस्तान अपने प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने पे काम कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, बिलीव मी व्हेन आई टेल यू, हमें हर तरफ से अटैक हो रहा है, एवरीवेयर, एवरीवेयर। एंड दिस इज नॉट अ कंस्पिरेसी थियरी, इट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। So yes, there's a lot of need for us to understand the sophistication and manipulation of using logarithms and artificial intelligence, and combine it with human psychology to be able to do right for the betterment of the society, equally for the safeguard of the society and to preserve our values, morals, culture, ethos, you name it. Yeah.
So then we have a question from Adil Aman, or Adil पूछ रहे हैं that I am director in media production line. So please guide me how to build more good work in direction, like frame, script, screenplay, lights, or more technique in this field. So I think this is quite ओके technical. आप इस क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर बड़ा तरीके से समझ सिंपल है सकते अदील हैं। अदील 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 बहुत सिंपल है अदील अदील अ, आप अगर गूगल करेंगे आपको फ्री में पीडीएफ स्क्रीन प्लेस के मुख्तलिफ फेमस फिल्मों के मिल जाएंगे द बेस्ट वे टू बिकम अ बेटर डायरेक्टर इज़ टू लर्न फ्रॉम पीपल हु बीन आउट देयर एंड बीन एक्नॉलेज्ड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फ़िल्म पसंद है और उस फिल्म का नाम है नोमान और नोमान एक मशहूर फिल्म है तो आप नोमान को सर्च करें उसके स्क्रीन प्ले उसको डाउनलोड करें फिल्म लगाएं दोबारा से देखें और स्क्रीन प्ले पढ़ें फिर देखें कि जब राइटर ने लिखा था कैसे लिखा था उसने हम्म, क्या सोच के लिखा था डायरेक्टर ने उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया तो पेपर से कैमरे तक वो कैसे ट्रांसलेट हुआ नंबर वन डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो एडिट कैसे करना है जो आप शूट कर रहे हैं वो एडिट कैसे होगा एडिट सीखने का मेरा आई कुड बी रॉन्ग लेकिन समथिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ हम्म, आप फिल्म को या जो चीज़ भी देख रहे हैं म्यूट करके विदाउट साउंड देखें जब आप उसका म्यूजिक साउंड यानी बंद कर देंगे और सिर्फ विजुअल चल रहा होगा आपको एडिट नज़र आना शुरू हो जाएगा राइट थर्ड आप लाइटिंग के ऊपर तवज्जो दें ऑल्दो ये गैफर का जॉब होता है ये डीओपी का जॉब होता है लेकिन जब तक डायरेक्टर लाइट नहीं समझेगा वो उस सीन को ट्रांसलेट नहीं कर सकता देर आर मैनी फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हाउएवर आई सजेस्ट आजकल ऑनलाइन एकेडमीज़ हैं यूडमी हैं और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये कोर्सेज मिलते हैं फेयरली चीप $20-30 के or you learn at your own pace kindly because you're a director so you're already in the business. I encourage you to take up a few courses and then learn. Master class एक series है बड़े बड़े directors उसमें tutorials दे रहे हैं सीखें because direction at the end of the day is not about simply directing but knowing ब्लॉकिंग कि आप क्या चीज़ कैसे शूट कर रहे हैं किधर रोकना है किधर दिखाना है वगैरह बट आई एम श्योर यू विल फाइंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वंडरफुल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन आई सजेस्ट पेड कोर्सेज कर लेंगे आपको तो आपके लिए बेहतर होगा So then we have a comment from Raza. Raza is saying, good topic and presenter. Thank you very much, Raza, for watching us on LinkedIn and sharing your feedback. Then Saima is watching us on Facebook, and Saima is asking, my question is, are we in a position to have our own digital platform to air our dramas, films? Because recently I've heard our content would be aired on Indian channel, for example, Z5. Okay, first of all, you have heard it right. Z5 has commissioned initially 5 web series in Pakistan. और उसकी इकोनॉमिक्स बड़ी सिंपल है इंडिया के अंदर एक वेब सीरीज़ की जो एवरेज है कॉस्ट वो 50 लाख इंडियन रुपीज़ है मिनिमम पर एपिसोड टू 1.5 करोड़ इंडियन पर एपिसोड नाउ द कन्वर्जन बिटवीन इंडियन एंड पाक रुपी इज़ 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल्स टू 2 रुपीज़ 25 पाकिस्तानी राइट तो एक सेकंड 25 पैसे हटा देते हैं पाकिस्तान में वो लगभग 28 लाख की एक किस्त बनवा रहे हैं राइट उनके यहाँ मिनिमम बिल्कुल छोटे कास्ट वगैरह लेके नए लोग लेके उनको पड़ती है 50 लाख इंडियन की जो पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट होता है 1 करोड़ रुपए पर एपिसोड और उसकी एवरेज जैसे मैंने कही थी 50 लाख इंडियन से 1 करोड़ 50 लाख इंडियन है यानी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए पर एपिसोड अब उन्होंने 5 पाकिस्तान को क्यों दिए नंबर 1 ड्रामा हमारा खासा है शुरू से था ये हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट था राइट उनको हमें जो 28 लाख रुपए पर एपिसोड इस वक्त इन 5 प्रोडक्शंस को मिल रहे हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पर एपिसोड पैसा मिल रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इससे पहले मिला ही नहीं
पहली चीज। हम्म, इंडियंस को ये 14 लाख रुपए इंडियन का पड़ रहा है, क्योंकि आप आधा कर लेना उनकी इकोनॉमी देखे तो वो क्यों नहीं यहाँ पे देंगे? वो बिल्कुल देंगे, उनको कंटेंट चाहिए और स्पेशली अच्छा कंटेंट चाहिए। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा कंटेंट लीगली अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेशन एक्सपोर्ट हो रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान का ड्रामा बहुत पहले से एक्सपोर्ट होता रहा है। हमारे जितने क्लासिकल ड्रामे हैं पीटीवी के, वो एक्सपोर्ट ही होते थे ना जी, इंडिया, दुबई, यूके, वीएचएस के दौर में। लेकिन डू यू नो कि वो स्मगल्ड होते थे ना जी, वो लीगली तो नहीं होते थे। उसका 1 रुपया नहीं मिला पाकिस्तान को टैक्स की मद में या कंटेंट बेचने की मद में। सो इट इज़ गुड दैट दे आर डूइंग दैट। व्हाट दे आर ऑल्सो डूइंग इज कि वो पाकिस्तान को हिला रहे हैं, मेरा ख्याल से, कि वो तो बिजनेस मॉडल है ना जी, उनको जहाँ से कंटेंट मिलेगा, बिकॉज विद अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इट डजेंट मैटर वो किधर का है, उसका जो सब्सक्राइबर है वो ग्लोबल है। वो बेशक इंडिया से ओरिजिनेट कर रहा है, उसका सब्सक्राइबर अब पाकिस्तान में भी होगा। जैसे नेटफ्लिक्स कहाँ से ओरिजिनेट करता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उस पर कॉन्टेंट देखना है। नाउ वो मज़ीद आपके एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, आपके राइटर्स को ले जाएंगे। मैं उन 5 में से एक सीरीज़ में आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर एज एन एक्टर, सो आई कैन नो व्हाट्स हैपनिंग। सो दे आर इन्वेस्टिंग। हमें जहाँ तक सवाल था प्लेटफॉर्म का, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ इट, कि हमें हमारा OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। हुकूमत इसको सीरियसली अब देख रही है, क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम नहीं करेंगे तो प्राइवेट एंटरप्राइज कोई ऐसी है नहीं। एक है जो मैं जिससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो, जिनके पास मसल और विजन दोनों है, दो हैं एक्चुअली। एक है हम टेलीविजन नेटवर्क, बिकॉज वो पब्लिक लिमिटेड है, दे कैन ऑलवेज रेज द मनी बिकॉज वो पब्लिकली लिस्टेड है। प्राइवेट होल्डिंग के अंदर जंग ग्रुप है जो ये कर सकता है, और किसी कोई अभी करेगा नहीं। जिसने ये कर लिया वो बेहतर रहेगा। पाकिस्तान के अंदर एक प्लेटफॉर्म आ चुका है जिसका नाम है स्टार्स प्ले। स्टार्स प्ले पाकिस्तान में आ ज़रूर चुका है और बहुत कम लोगों को पता है। ये एक्चुअली लायंस गेट जो इंटरनेशनल कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है। लेकिन देखिए, ये OTT ऑन जो प्लेटफॉर्म है क्या बेसिकली, कि आप उसका सब्सक्रिप्शन देते हैं, यू नो राइट, इट्स लाइक अ वीडियो क्लब। क्या आप इमेजिन कर लें कि आप अपने मोहल्ले के वीडियो शॉप को, DVD सेंटर को एक फिक्स पैसों में जितनी चाहे फिल्में देख सकते हैं जो उसके पास पड़ी हैं। हुआ ये कि उसके अंदर स्टार्स प्ले जब पाकिस्तान में आया, उसमें भी वही कंटेंट है जो आपको अमेजॉन प्राइम पे भी मिल जाएगा, आपको नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगा। तो आप स्टार्स प्ले क्यों देखें, जिसके अंदर कंटेंट, एक तो इन्वेंट्री जो कम है, और दूसरा जो फिल्में हैं वो हर जगह भी हैं। तो आप 3-3 जगह सब्सक्रिप्शंस क्यों लेंगे? तो फिर फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की मिसाल ले लें। 1997 में ये कंपनी बनती है। इट वाज अ वीडियो रेंटल कंपनी, राइट, एंड दिस इज व्हाट दे डिड। वो वीडियो रेंटल का कॉन्सेप्ट पोर्टल पे ले आए और आपको वो रेंटल पे देने लगे। यही किया ना उन्होंने। ये फिनोमिनल ग्रोथ तब हुई जब नेटफ्लिक्स ने ओरिजिनल्स बनाने शुरू कर दिया, अपना कंटेंट एक्सक्लूसिव बनाना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर स्टार्स प्ले है ज़रूर, लेकिन क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा लोकल इंडस्ट्री में, अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं बना रहा, इसलिए उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ आने से। गवर्नमेंट को इसलिए करना पड़ेगा या किसी और एंटरप्राइजिंग कंपनी को कि यहाँ पे जितना वेल्थ है टैलेंट का, मजाक के अलावा, वो फिनोमिनल है। और आप जितनी जो इनके ऊपर सख्तियां हैं ना, जो टेलीविजन इम्पोज करता है, नहीं इसी सास बहू पे बनाओ, नहीं यही करो, जब आप उनको इससे आज़ाद कर देते हैं, व्हेन यू फ्री देम ऑफ दीज लिमिटेशंस एंड थिंग्स यू एक्चुअली फोर्स अपॉन देम, दे क्रिएट ब्रिलियंट कंटेंट। और हमारी फिल्मों में आप देखते हैं ये हो रहा है, हमारी नई फिल्में बेहतर आ रही हैं। इसी तरह हमारा डिजिटल कंटेंट जब प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो ही हमारी बेहतरी, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सो आई एग्री विद यू, बट ऑल्सो ऑन अ हैप्पी नोट दैट पाकिस्तान जो है इज सीरियसली वर्किंग ऑन दिस। पाकिस्तान एज इन दिस करंट गवर्नमेंट
So I'm very hopeful something good will come out. All right. Thank you very much for a detailed answer to this question. And I think we do not जी have much time left according to our schedule. So, हाँ still, जी there are questions coming in the comment section. So, let me take the last question. So, uske baad, yes then please. probably we can wrap it up. So, we have a question on YouTube from SN Faisal. और एसन पूछना ये चाह रहे हैं कि young youth generation, young people of Pakistan, how they can secure their jobs in the government sector of Pakistan. And last but not the least, वो कह रहा है क्योंकि entrepreneurship is very rare और very challenging. तो government sector में कैसे वो नौकरियां हासिल कर सकते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी हासिल करने का बड़ा सिंपल तरीका है. या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे. कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे तो इश्तिहारात आते रहते हैं रिक्रूटमेंट के, आप अप्लाई कर लीजिए. अगर आपने परमानेंट बनना है तो फिर आपको मुकाबले का इम्तिहान देना पड़ेगा, प्रोविंशियल सर्विस का, कंपेरेटिव सर्विस का, या आपको फेडरल कमीशन का कंपेरेटिव CSSP का इम्तिहान जो होता है आप ज़रूर दें. अगर आपकी उम्र अभी भी है आप ज़रूर दीजिए. अगर कॉन्ट्रैक्चुअल होना है तो फिर देखें आपके चाचे मामा खालू क्या करते हैं. हम्म, कॉन्ट्रैक्चुअली वो कहीं मदद कर देंगे, क्योंकि हम तो शॉर्टकट्स लाइफ में ढूंढते हैं. आपने भी तो ये सवाल करके शॉर्टकट ही ढूंढा है कि एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है इसलिए सरकारी नौकरी कर लें. सरकारी नौकरी का पे स्केल आपने देखा है क्या है, ये सोचने से पहले. हम्म, और फिर आप जस्टिफाई करेंगे, माइंड ना कीजिएगा मेरी बात, फिर आप दो नंबरी करने को जस्टिफाई करेंगे कि इसमें गुजारा नहीं होता. हम्म. जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, मेहनत से करें. मेरे नज़दीक चार चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी. वाकयात, हालात, मुआवजात और मुमकिनात. द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर थिंग्स. और ये मैनी अलामा इकबाल कहते हैं. तो इसकी जो कॉम्बिनेशन जब आप क्रिएट करते हैं ना, फिर आप जाके आई थिंक अपने आप को एक्चुअलाइज करते हैं. एक्चुअलाइज नॉट इन मैस्लोज हायरार्की, बट एक्चुअलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू एस्पायर टू डू, व्हाट गिव्स यू दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग व्हाटएवर दैट यू विश टू डू. हाँ, अगर ये चार चीज़ें कल्मिनेट करके आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जा रही हैं, आई डू नॉट विश टू डिस्करेज यू एट ऑल. प्लीज डू इट Do एब्सोल्युटली. it if you would बट like डोंट to. से एट द कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ये किसने कहा है ख़त्म हो गई है? बिल्कुल नहीं है. आपके अंदर है तो बाहर आनी चाहिए. Yeah, अगर आपके पास idea है, if you have the courage, if you have all the resources जी हाँ and जी, means to make your idea happen, then just do it. आज भी लोग हैं जो एक दिन में एब्सोल्युटली. वायरल हो जाते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं, then the product is something which is really fantastic, phenomenal. वायरलिटी तो चले और चीज़ है ना Yeah. जी. वायरलिटी तो वन हिट वंडर की तरह है, बंदा एक गाना गाता है हिट हो जाता है. वायरलिटी से ज़्यादा वाइटैलिटी देखनी चाहिए, Hmm. True, true. लॉन्जिटिविटी देखनी चाहिए, Hmm. एथिकल प्रैक्टिसेस देखनी चाहिए और कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए. अब वो एक बंदे ने गाना गाया था, 1 pound fish. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट. Yeah, yeah, यूके everybody का knows कोई था. 1 pound fish. वो इतना वो मशहूर हो गया, उसके बाद उसको PTCL ने पाकिस्तान में हम आपको पता है ना, वी आर लेजी. Hmm. कौन इतनी मेहनत करे. अभी अर्तुगुल आ रहा है तो उसकी लड़की को हर चीज़ में डाल लो. ये वेरी लेजी, आसान काम है ना. उस खातून को जो भी उनका नाम है, इसरा या जो भी है, हर चौथे इश्तिहार में उसको आपने ले लिया. राइट, वी आर लेजी. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए, स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, करियर्स के अंदर तो स्पेशली, और प्रोफेशन पिक करते हुए तो एब्सोल्युटली ये एसेंशियल है. वरना आप तंग आ जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे. आप यू विल नॉट लुक फॉरवर्ड टू मंडेज और एंजॉय योर सैटरडेज. Exactly. Anyway, Shahzad, it is really, really interesting discussion, and I think we need much more time. If I'll keep on asking you questions for 24/7, you would definitely keep on replying I'll be to all all, questions. So, but every conversation has to have an end, and so if yes. with this conversation, what one last
comment from your side, people who are watching you out there, especially from Pakistan, what is your message to them if they are looking forward to build their career in the media industry? Just quickly, one last comment so that we can wrap it up on that note. I just believe ये intrinsic है. I mean, it's not about media. I mean, आप अपने ऊपर यकीन रखें ना. मेरा मतलब है मीडिया, मतलब मीडिया इज जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स. बात यह है कि क्या आपको अपने ऊपर एतमाद है, या आप खुद अपने बारे में खाम ख्याली रखते हैं. डू यू एक्चुअली बिलीव in the talent that you have, or the ability or the capability that you possess, or do you think that you have a higher opinion of yourself? So be pragmatic, keep trying, do not give up, and also do not look for shortcuts. मैं इससे बड़ा मैसेज नहीं दे सकता. कुदरत, let nature take its course, give nature that breathing space. ये नहीं होता कि अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है और आप उसको कहें ये देखें ये मेरा बेटा कल पैदा हुआ है माशाल्लाह, ये जो है ना PhD है या ये MBA है. गिव योर सेल्फ दैट स्पेस. ये अपने गिर्द लेफ्ट राइट सेंटर में देख के don't feel that you are in some competition. It's okay to fall, it's okay to fail, as long as you know that at the end of the day you will get up and pick up your staff and go fight again. प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. हम शॉर्टकट बहुत ढूंढने लगे हैं कि वो ये कर रहा है, वो सबको भूल जाए. एंड में आपका अपना कॉन्शियंस है, आपकी अपनी एक मेजर है सेटिस्फैक्शन की, अटेनमेंट की. ट्राई एंड बी हेल्दी इन योर माइंड, एंड एवरीथिंग एल्स आई थिंक विल लाइक बिग पजल, ऑल द पीसेस विल फॉल इन इट्स प्लेस. मैं आपको ऑनेस्टली यही बोल सकता हूँ. Thank you very much. I think that's the wonderful note that we can end this conversation. Still, we have some questions. For example, Komal, she would like to know how do you define success? I mean, that's a lengthy topic, and definitely we don't have time to cover it up right now. मैं कोमल की इस बात का लेकिन बहुत छोटा सा लास्ट जवाब दे दूं. ये बहुत खूबसूरत बात उसने पूछी है. अगर आप अलाउ कर दें रियल क्विकली, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा. Sir, all yours. If you would like to talk for Success का जी, no, I can't. I haven't smoked in all this session. I gotta smoke. सक्सेस का ये याद रखो, मैं अपने आप को 1997 तक, उस वक्त तक मैंने 92 में अपना करियर स्टार्ट किया. 1997 तक I thought I was God's gift to mankind. I had this arrogance seeping in because I had won 102 international awards by that time. I was hot and happening. उसके बाद and I started feeling that I'm very successful. And then I probed कि मेरे नज़दीक सक्सेस फिर क्या होनी चाहिए. पैसा, मकाम, रुतबा, etc. etc. In 1997, I thought कि the measure to success should be different. तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मेरी मौत के वक्त, मेरे मरने के बाद, मेरे रिश्तेदारों को छोड़ के मेरी मैयत पे 10 लोग आंसू बहाएंगे, रोएंगे दिल से. मतलब जोर से नहीं, आंसू बहाना एज इन दे वुड एक्चुअली फील द लॉस. और 10 दोस्त ऐसे हों. तो मैंने आपको बताया आई वॉज मच यंगर देन, और एरोगेंस सीप इन कर रही थी. बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर वो हिकारत, ह्यूमिलिटी, आजिज़ी रखना. तो मैंने अपने आप से हंसा. मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, पेपर पेन लेके मैं अभी 10 नाम लिख लेता हूँ. इतने लोग मुझे जानते हैं, मेरे साथ हर वक्त रहना चाहते हैं, दे एंजॉय माई कंपनी, ये क्या मसला है. आई रिमेंबर एक्सप्लिसिटली मेरे पास 4 नाम के आगे 5वां नाम नहीं था. 1997, आज 2020 है. शायद वो 4 से भी 3 रह गए हो, 5 नहीं हुए, 6 नहीं हुए. तब मुझे पता लगा कि असल सक्सेस दुनियावी नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर शेर पे सवा शेर है. क्योंकि अगर आप देखा जाए तो मैं और बिल गेट्स, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, वो एक जैसे ही हैं. तो आप हैरान होंगे.
तो लेट से मेरे पास 50 रुपए पड़े हैं और बिल गेट्स के पास 50 मिलियन पड़े हैं, तो ना वो गाड़ी की डिग्गी में रख के घूम रहा है ना मैं, तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। वो तो बैंक में पार्क है, लेकिन यहां से उसको पता है ना, 5,000 गज के बिस्तर पे वो भी नहीं सोता, मैं भी नहीं सोता, एक वक्त पे चार टाई वो भी नहीं लगाता, मैं भी नहीं लगाता, वगैरह वगैरह वगैरह। हर चीज़ हम वो करते हैं एक जैसी। वो दुनिया का महंगा तरीन खाना खा ले और मैं सस्ता तरीन खाना खा लूँ, सुबह हम दोनों के अंदर से गलाजत ही निकलनी है। जो आदमी ये समझ जाएगा, उसके लिए सक्सेस का पैरामीटर बदल जाएगा। एंड द डे यू रियलाइज दैट, कोमल, you will start seeing how successful you have started to become and being successful. And you will let go of all these artificial pressures and these yardsticks whereby the society or your colleagues or your peers tell you what success is. Trust me, that's not success. That's one big deception and it's not going to last. I'm sorry, Numan, I had to answer because that was such a pertinent question. But yeah, over to you. Yeah, thank you very much for replying to this specific question, because ultimately this has opened a lot of other perspectives in the minds of everybody who's watching out there. So, guys, thank you very much. And thank you very much for this interactive discussion in the comment stream. We still have some questions, but unfortunately, we have limited time, and maybe we can come up with another session in future. So, Shahzad, thank you very much again for taking time out of your busy schedule. And I really, really appreciate your sense of sharing knowledge with others. And I must acknowledge, और मुझे ये चीज का इतराफ करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए, that you are a celebrity, you are, in the mainstream media of Pakistan. So ऐसे लोगों की तरफ से reply बहुत कम आता है, but you are the one who actually replied to my invitation at a very, very short notice that yes, let's do it, which I really, really नेक्स्ट appreciate. टाइम नहीं, इट्स माय प्लेजर। नेक्स्ट टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे बुलाएं, मदऊ करें, कोशिश कीजिएगा अंग्रेज़ी की कतगन मेरे पे ना लगाएं, बिकॉज आई गेस इट जस्ट आई कांट थिंक इन इंग्लिश, राइट, आई थिंक इन उर्दू। सो Correct. नेक्स्ट टाइम अगर कभी हो, तो अगर मुझे वो लिबर्टी हो कि उर्दू ज़्यादा हो, तो फिर आई थिंक ज़्यादा ज़्यादा खूबसूरत नशस्त रहेगी। नॉट टू से दैट इंग्लिश टेक्स इट अवे, बट Yeah. इट इज़ माई ओन लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन द eloquence and articulation in me, I guess, isn't really up to the mark when I speak in a language which is foreign to me. Therefore, I request the next time we do it, उर्दू में करें तो बड़ा बड़ा Next time खूबसूरत हम रहेगा। बिल्कुल उर्दू में करेंगे, and we will pick up a topic which is very, very local in nature, especially for the Pakistani people. उसके ये कि मुझे भी थोड़ी सी अपनी उर्दू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी उर्दू का पाकिस्तान से बाहर रह रह के ना थोड़ी घरेलू आज उर्दू। आपने मेरी अंग्रेजी की बड़ी मेरे जबड़ों में दर्द करा दिया, अंग्रेजी बुलवा बुलवा के, बट आई अंडरस्टैंड दैट वाज योर फॉर्मेट, सो या। नहीं नहीं, मैं जब यकीन करें, मैं जब आप उर्दू बोलता हूँ तो मेरी उर्दू में उतनी रवानी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी जब मैं पाकिस्तान में रहता था, क्योंकि जुबान का ताल्लुक बोलने से बहुत ज्यादा है। जो जुबान आप रोजाना की बुनियाद पे बोलते हैं, तो आपकी लफ्ज तो मुझे अभी भी आते हैं, लफ्ज मुझे अभी भी आते हैं, जखीरा है सारा उर्दू का, लेकिन वो उतनी रवानी जो थी ना, वो नहीं आती है जब मैं उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एनीवेज, नेक्स्ट वन हम बिल्कुल उर्दू में करेंगे, और फुल फ्लेज देसी टॉपिक के साथ। ऑलराइट, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, एंड गुड बाय, एंड अल्लाह थैंक हाफिज यू, टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।